Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class we are going to discuss about INN. What is INN? International Non-Proprietary Name of Drugs. Okay, so this is the section of Pharmacovigilance and it is from the unit 2 of BPharm 8th semester. Clear everyone? Basically sometime in university examination, examiner may ask, write a short note on INN. Okay, that's why this is the important part. As well as this section is also covered in the general pharmacology. This non-proprietary name are also covered. After reading INN, the thing come in our mind, what is INN? INN kya hai? INN is basically identification of pharmaceutical substance. Identification of pharmaceutical substance or active ingredient. Clear? So the next thing come in our mind is what is the need of INN. ओके आखिर INN की जरूरत क्या पड़ गई, तो हमारी इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड, इसको डेवलप करने के पीछे क्या कारण रहे हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं. इनिशियली व्हाट हैपन, इनिशियली देयर वाज टू काउंसिल्स. द फर्स्ट वन इज यूसान एंड द सेकेंड वन इज बैन. ओके, यूसान मीन्स United States adopted name and BAN means British adopted name. So initially these British and Americans were very developed, so they decided to give a name to a chemical substance. Actually chemical name means IUPAC name remains same for whole over the world. But whenever the particular country giving a name to a chemical substance, that time a same compound given different name in different country. Okay, क्या होता था, जब कभी भी कोई भी कंपाउंड डिस्कवर होता था तो उस कंपाउंड का आयुपेक नेम तो सेम होता था, बट यूएस में उसी कंपाउंड का नेम अलग है, ब्रिटेन में अलग है, यूरोप में अलग है. सो इट क्रिएट कंफ्यूजन अमंग साइंटिस्ट. So what is the need basically? To remove the confusion among the scientists. Okay, then clear identification. Second one is what? Clear identification in whole over the world. Safe prescription is the another point. Safe prescription and dispensing of medicine to the patient. Okay, this is another important point. And what is the other reason behind development of IAN? There is a need of communication. There is a need of communication between scientist fraternity. Communication, better communication among health professionals. So if communication is better, then exchange of information will be better. Exchange of information will be better. So exchange of info. So that's why scientists think that there should be a common body to decide the name of the drug. There should be a common body to decide the name of the drug. Okay, so they create a body to develop the name, international non-proprietary name of the drugs. Okay, and initially in 1950, so I am talking about the history of INN. In 1950, what happened? World Health Assembly established a system, and they released the first list. They released the first list of INN. They released the first list of INN in 1953. In 1953, clear? So World Health Assembly was the important organization. Nowadays WHO become a organization which make consensus for all world. So till now almost 7,000 INN name are added in the list, and every year almost 120 to 150 name added every year because new drugs are developed. Okay, so now again focusing on INN. Initially what happened in USAN, there I am giving you the two examples, like some of the drug, like there are example mepcridine and pethidine. These are the same drug but still used by different name in US and Britain. Okay, because of historical use both the drug are same and but used by different name in different country. Again there is one more example, lidocaine and lignocaine. Both are the same drug but used as a different name in different country because of their more and more popularity in that particular country. Clear? So nowadays to remove this confusion, IAN is established, and IAN basically
nowadays considered as a generic name. INN considered as a generic name of the drug. Okay, this is also considered as a generic name of the drug. Clear everyone? Understand clearly? Because just think, I am giving you one example. Like there is a drug which can treat the fever. The name of the drug is paracetamol, and paracetamol is the INN non-proprietary name. Okay, paracetamol is the non-proprietary name, but its brand name is different. Like we are purchasing a crocine, we are purchasing calpol, we are purchasing a metacine. These all are brand name, and paracetamol is a generic name, and its IUPAC name is also known as a chemical name. IUPAC name is also known as a chemical name, which is similar for everywhere. These generic names are nowadays become famous. These generic names are nowadays become famous because worldwide they are used. Okay. Now understand what is the benefit or use of INN. Use of INN. What is the use of INN? INN का use क्या है? So first thing is it is used for regulation. Okay. Second one is when the drug come into the pharmacopoeia. It means it is used for pharmacopoeial purpose. Third, for labeling purpose. Next one is product information and advertising purpose. Okay. And for scientific literature. Okay, so these are some benefit of INN. Now as you all know, nowadays we all know that in India, in government sector, doctors are abide to prescribe the drug by generic name. So what is the benefit of it? Actually generic drugs are cheaper. Why generic drugs are cheaper? Because any company creating its product or it making, and they are making it a brand, so they are spending lot of money to establish their brand, and as well as they also spend lot of money on the research. That's why brands are costly, and they also have a quality and good bioavailability. So people from the USA or European country where regulation are quite good. ओके जहां पर वो कंट्री जहां पर की रेगुलेशन ड्रग्स को बनाने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन WHO और US FDA के रूल्स फॉलो किए जाते हैं प्लांट्स में, तो वहां पर जेनरिक ड्रग को भी यूज़ किया जा सकता है. जेनरिक ड्रग्स को भी यूज़ किया जाता है क्योंकि उनके भी स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे होते हैं. बट वो कंट्री जहां पर की ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी ढील दी गई है, तो वहां पर जेनरिक प्रोडक्ट को यूज़ करना जो है इज लिटिल बिट रिस्की. मैं केवल उनसी की बात कर रहा हूं जहां पर हाईली रेस्ट्रिक्टेड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती और वहां कोई जेनरिक प्रोडक्ट बन रहा है. हम केवल उसी की बात कर रहे हैं. अदरवाइज जेनरिक प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गुड. क्लियर एवरीवन? सो what is the benefit to prescribing drug by a INN name or we can say generic name? जेनरिक नेम से ड्रग को प्रेस्क्राइब करने के क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है? यूनिफॉर्मिटी. सबसे पहला फ़ायदा क्या है? यूनिफॉर्मिटी है. कंप्रीहेंशन है. सेकंड वन इज कंप्रीहेंशन. थर्ड वन इज इकोनॉमी. इकोनॉमिक रहता है प्रोडक्ट. एंड द फोर्थ वन इज कन्वीनियंस. कन्वीनियंस कैसे होगा? आप देखिए बीटा ब्लॉकर्स जो हैं लाइक मेटोप्रोलोल, एटेनोलॉल, ये अगर इनके हम ब्रांड नेम देखेंगे तो हर एक कंपनी का ब्रांड नेम अलग अलग होगा. बट अगर किसी को बीटा ब्लॉकर एटेनोलॉल प्रेस्क्राइब करना है तो सभी जगह वो एटेनोलॉल ही लिखेगा. तो ये कन्वीनियंट रहेगा, डॉक्टर्स के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा कि उन्हें कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम याद नहीं रखना है. क्लियर? तो इस तरह से ये कन्वीनियंट है. बट इफ साइंटिफिक कम्युनिटी वांट टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, अगर साइंटिफिक कम्युनिटी अश्योर करना चाहती है कि बायोअवेलेबिलिटी और क्वालिटी की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, वो उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर कि रूल्स एंड रेगुलेशन रिग्रेसली फॉलो नहीं होते, तो वहाँ पर ब्रांड नेम वाले प्रोडक्ट को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा. क्लियर? और जेनेरिक में ऐसा फ़ायदा होगा कि यहाँ पर अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन करके लिख दिया जेनेरिक ड्रग, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट फ्री टू गिव
द ड्रग फ्रॉम एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, वो किसी भी मैन्युफैक्चरर की ड्रग, जेनेरिक ड्रग आपको दे सकता है, फार्मासिस्ट फ्री हो गया वहाँ पर। और अगर ब्रांड नेम ही प्रेस्क्राइब किया तो क्या होगा कि फार्मासिस्ट को बाउंड हो जाएगा, फार्मासिस्ट को वही ड्रग जो है वो डिस्पेंस करनी होगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन द इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। व्हाट इज द नीड मैंने आप लोगों को बताया, हिस्ट्री मैंने बताया, यूज़ क्या है इसके और बेनिफिट क्या है, तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पर शॉर्ट नोट आपके लिए आ सकता है। तो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, एंड इफ यू थिंक दिस लेक्चर इज यूजफुल देन शेयर टू अदर्स एज वेल। जय भारत, जय हिंद।